Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. So now we start our chapter height and distance. Page number 343. Hmm. Okay. So no 343 नहीं है 334 sorry. 334. Hmm. Hmm. So now last lecture we bring something. Okay. So now today lecture Basic. we try to increase something new. Okay. Okay. So now first of all we understood the what is the trigonometric relations. Okay. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस. तो दिस इज नहीं ये भी नहीं चलेगा. एक मिनट. ऐसा कोई ट्रायंगल है ठीक है. If any triangle like look like this. नहीं मजा आ रही है. रुक एक मिनट है ना. हाँ सर. उतार दो. हेलो सर. हेलो हेलो हेलो. हो गया. हाँ सर. Can you see this triangle? Okay. Yes sir. Okay. So you can see this triangle. In this triangle, what we see here? So three sides. But ये main चीजें ध्यान रखनी है कि here the three sides. Okay. But what is the main problem? There is no one angle is a 90 degree. No one angle is 90 degree. Okay. जब ये नहीं होता तो साइन कॉस कोई भी आता नहीं है. पहले तो इतना समझ लो. साइन कॉस टेन कॉट ये कोई भी रिलेशन नहीं बनती है. क्लियर है. तो जब ऐसा हो तो कोई रिलेशन नहीं बनेगी. ठीक है. तो अब ऐसे एंगल्स में कभी कभी आ जाता है तो क्या करने का है, इसमें बीच में से कट कर दो. ठीक है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दो बन जाते हैं ऐसे और एक ऐसे. समझ रहे हो. तो एक यहाँ पे Yes बन sir. गया. अगर मैं बताऊं अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपको तो समझ लोगे कि अगर इस लाइन से यहाँ से मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा समझ
कि एक यहाँ पे Yes, एक sir. लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ तो उसका मीनिंग कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का मुझे एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो आई कैन फाइंड 190 डिग्री एंगल हियर, ओके। तो इतना क्लियर है कि यहाँ पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी। तो ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाता है तब इसको एक साइड बीच में ऐड कर दो, तो ये एंगल ट्रायंगल जो है वो साइन कॉस की रिलेशन फॉलो करेगा, ठीक है। क्लियर इतना? Okay. तो ये Yes, ऐसा sir. कोई साइड आ जाता है तो ये बेसिक से इसलिए एक बार करवा देता हूँ, फिर बुक से चलते हैं, ठीक है। तो इतना लेके आगे चलते हैं अब। तो देखो आगे क्या है कि मैं कोई भी एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माय ट्रायंगल, ठीक है। 90 degree. 20 हो गया, ये है, चलो चलो। तो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल ले गए तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन जाएगा, मम्मी. ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा। Okay. तो आगे देखे तो ये एक एंगल और ये एंगल, मेजॉरिटी एंगल कौन से होते हैं, तो जो हमारे रिलेशन में आए, 0 तो होगा नहीं, तो एक होगा 30, एक 45, एक 60, 60, 45. एक 90। ये चार ट्रायंगल। 90 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए, 30, 45, 60 और 60। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब कोई एंगल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ चले। जब एम है अलग रेशियो होता है तो एम स्लोप दिखाता है। तो कभी कोई एंगल ऐसा मेरे को दिख रहा है कि ये एक एंगल है और ये एक एंगल दूसरा एंगल है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है? तो if any angle, one angle is 45 45. degree and one degree 90, then other is 45, then this and this value is same. This ratio is always same. Clear? So what we do now here? So first of all we ये should, इसका छोटा वर्जन है कौन सा? ये. Here the 45. This angle is 45. Then also this angle is also 45. Okay? हाँ वही ना, ये ट्रायंगल का छोटा वर्जन है. हाँ छोटा वर्जन ये वाला, एंगल दिखा रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि जब कोई एंगल 45 सर मतलब डिग्री होता है, इसके मतलब जो एंगल्स ये हो गए फिर ये हो गए वो ही इधर ये बड़े वाले ट्रायंगल के हो गए ना. ये अगर 45 हो रहा है तो ये तो कॉमन है, ये ऑलवेज 90 है हमारे पास। तो ये उसका 90 माइनस 45 मीन्स 45 ईयर, ओके। तो both are 45. So what we do now here, we know that sin 45 is equal to cos 45 or not. Yes sir. Cos 45 is same. So that's what the mean. That the whenever the means is sin 45 and cos 45 means I say if one person here, one person is standing here, I draw one point. One person is standing here, okay. G point is a standing person, and if he think that G and E is a 5 kilometer, is a 5 kilometer, then what they do? This is a 5 kilometer, okay. Then what the mean? The angle here is a 45. So find this angle, this distance. That time what we do, not doing big calculation, directly we say this is a 45. That means this side and this side is always same, okay. So this is also 5. Clear this approach? So not doing big calculation but show the angle first. So here the 45, that means this both side are equal.
Clear this? So now what is meaning? Okay, FE is equal to DE. Clear? Hmm. But when the angle is one angle is 45, any angle is 45. Okay. If this is a 90, okay. So it's clear. So now we bring our main discussion. So last time we discussed about the eyesight and that things. Okay. So what is meaning of eyesight? So last time we discussed about here. I using some arrow. Okay. So from this point C, so I draw some arrow. You can see this arrow. Okay. So in this arrow, you can see this is our eyesight. Means our eye is here. Here my eyes. Okay. And I show from this side. Okay. This is my eyesight. Okay. Clear this? Eyesight. Yes, sir. Angle of Eyesight. But elevation. whenever I am here, I am showing this side. So this is my other angles. Okay. So you can open your book page number 334. Wait, 334. This is a horizontal. First of all, what is horizontal, vertical? So here H horizontal, V vertical. I always remain this type of simple things. So angle. This is the angle of depression. Okay. Here the Hmm. angle of depression. This is the angle of depression. Okay. The angle of depression, and this is the elevation. This is the angle of elevation. Hmm. Means if you are here, you saw the tractor like they are moving from this side to this side. Okay, tractor like. So this is the angle of elevation. Elevated means up. Okay, so this is angle of elevation. This is the angle of ऊंचाई depression. Means चढ़ता this हुआ. is हाँ जो elevated होता है, ठीक है. और ये depress होता है. Means depress means down and elevated means up. Okay, clear? So this is the angle of elevated. Directly they are writing Yes. sometime like this example. So I write here. Here the angle Hmm. of elevated is angle of elevation is 30 degree. या तो ऐसा लिखा होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ये एलिवेटेड है, ठीक है, और ये डिप्रेशन का एंगल है कुछ 60 Hmm. डिग्री. तो अब आपको फाइंड करना है, तो अब कैसे Okay. फाइंड करेंगे देखो ध्यान से. तो इसमें इतने में पूरा रिलेशन मिल जाता है. देखो कोई भी एक एंगल मिलता है तो भी रिलेशन मिलता है. कैसे होगा देख लेते हैं. यहाँ पे से ये बी पॉइंट है जो मेरा, ये बी पॉइंट से आप बी पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बी से डी, तो बी से डी ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन. Hmm. ओके. तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ Yes, ये sir. एंगल लूंगा, ये एंगल, तो ये एंगल मेरा कौन सा है, डिप्रेशन का, तो ये Hmm. कितना होगा 60 डिग्री. बट वी नो आवर जेड प्रिंसिपल. ओके, this angle and this angle remain same. Okay, so if the angle is 30 degree, elevated angle means this angle 30, this angle is always 30. Okay, so this is angle 60, that means this angle also 60. Clear this approach? Yes, sir. Understood this thing? So if this Yes, is sir. this angle depression angle is 60, that means what, elevated angle is 60. If they say Yes. elevated angle is 30, that means our depression angle also 30, and both are angle 30. So sometimes they are giving this depression angle and the one side. So that means you understood that this side and this angle is same. Okay, clear this? Yes, sir. Both angle are same. So depression and elevation angle is the same angle. Okay, clear this? Hmm. Hmm. So this is our first concept of angle of elevation and angle of depression in your book. Now we taking some examples from this. Okay. So what is here? We are also doing this type of example in our last standard. So we are bringing this type of example. Okay. So here the first example of your book is this is under root 3x and this is a x. So find the value of this, find the value of these angles,
Okay, so what we do here? Here we have two sides. If any two, then what we do? Sine theta is what? So sine theta we cannot use because here the no you have no this, Angle you is don't not know given. this, and you also don't know this. Then we use tan theta. Okay, you have both side, then using tan. Okay, so tan theta. So what is tan theta? AB tan C. I say tan C. Okay. So what is tan C? AB upon BC. Hypotenuse. BC tan C. Tan. Tan. What I हाँ say 10 tan. 10 Tan and cot. हाँ Okay. T. Yeah, that's right. हम्म So tan C is equal to what? AB upon BC. So x हम्म upon root 3x. Okay. The x cut 1 upon root 3. Clear this? हम्म So we can see yes this sir. angle. Angle C is what? So we can easily say this x tan 30 is equal to what? 1 upon root 3. Tan हम्म 30 is equal to 1 upon root 3. So what the mean here? This theta is 30. This 30 is degree. 60. This is always 90. So we हम्म can easily find this. Okay. yes sir. So our first example is over. Now second example. If the angle of elevation, take 1 minute. If they are drawing, 1 minute. You can show this is a AB is our tower. The second example I read first, then we draw the figure. The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 120 meter. So I already say the distance is always a horizontal. Okay. So BC is our distance. Okay. So BC our distance is 120 meter from its foot on a horizontal plane is found to be a 30. Find the height of a tower. So what they're doing here? So here the angle of elevation. They first of all write the some things. They're writing the angle of elevation. Okay. So what they mean? So here the angle, this angle of elevation means this 30. Okay. They are giving means we understood this is a 60, and also giving the CB means the distance. Okay. This distance they are giving. The distance is 120 meter. Okay. Clear this? So what we do here easily we can find this and these things. Okay. So very easy. Okay. So we take a what they said, find the height of the tower means the find the AB. What is the AB? Okay. Yeah, say what is the AB. So what we do here, find the AB. How do we can easily find? So when we use 1030, what is the 1030? AB upon BC. Okay. So what is AB upon BC? So what is AB upon BC? Wait 1 minute. Okay. So 1030 is equal to AB upon BC. So AB upon BC, so BC is equal to 120 into 1030 is equal to AB, or 1030 is 1 upon root 3. Okay. So we can easily find AB. Clear this? So what is the AB? 120 upon root 3. So we can eliminate root 3 by this 3 into 40, and this 3 is equal to root 3 into root 3. This root 3 one cut and one root 3 is remain. So root 3 into 40 is our answer. Okay, clear this? So now we take next example. Any doubt in this question? No sir. Okay. So now we take a next example. Okay. A guard हम्म observe an enemy boat. Okay. For an observer tower. Now we already discussed about this concept on yesterday. Okay. yes sir. So whenever we see horizontal, so that what they mean here. One bird person is standing here and see this type direction. Okay. So enemy bot from an observer tower. From the tower means from here. I write here. This is a tower. Okay. On this point.
Okay, so from observer tower, tower at height of 180 meter above sea level. What they say? 180 meter above the sea level. यहाँ पे sea level है, ठीक है? Here the bot. We understood this is a bot tower. Okay, and this is a bot tower. Okay, so you can understood this. So above sea level to be an angle of depression of 29. Now what they given? Angle of depression means this angle is what? 29. Okay, the angle of depression is 29. To be calculate the nearest meter, the distance of the bot from foot of the observer tower. Foot of the observer tower, and after some time it observed that the bot is 2 meters from the foot of the observer tower. Calculate the new angle depression. So here they what they show. So first of all what they show here. First the bot is here. After some time bot is moving and bot is coming here. Okay. So that time our angle is also changed. But from this Okay. angle we can find this AB. Okay. Wait 1 minute. Okay. From this we can find the A. Wait. Okay. From we can find AB. How? We know this distance. This is a 29 degree. Okay. So we know this 29 degree. Okay. So what doing here? So we doing 1029. 90 minus 29. 1029 because this is also 29. You also know Z principle. So this is also Yes, sir. 29. So I already explained this concept. So this is also 29. So what they do here? So 1029 is equal to AB upon BC. So what we do? So here we know the height of the tower is a 180 meter. Means AB is equal to 180. So we can easily find this BC. Okay. From okay, we can find BC also here and AC also here. Okay. Now after some time what happened? This bot is going this side. Okay, and from there, so we draw this line. Okay, like this, and I say this is a point D. Okay. So now ABD. Okay. So this is our new triangle. सर ये सेंटर में है. Yeah, this is always center. Means this is a tower. ये What? बॉट पहले यहाँ पे सी पे, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आ गई एनिमी बॉट, और ये सर टावर है लेकिन ये वहां से दोनों पॉइंट के सेंटर में आई है बोट. नहीं, ऐसा नहीं है. 200 मीटर अच्छा यहाँ ऐसा से नहीं ये है. डिस्टेंस 200 है अभी. अच्छा हाँ. इससे हम फाइंड कर ओके लेंगे पहले डिस्टेंस क्या है ये. सर मैं आपको पता बोलूँ एक चलेगा. बात बोलूँ. हम्म. सर देखो पहले हमको जैसे ये सारे एंगल्स तो पता है, हम्म. तो फिर हमारा ये डिस्टेंस फाइंड करना इजी हो जाएगा. पहले वो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर 200 उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर लेंगे. हाँ. और ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा. ठीक है. और फिर उस तो डिस्टेंस से डिस्टेंस से ये हम तो फिर पता एंगल ही भी है, फाइंड कर सकते हैं. ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो टाइम ओवर हो गया है. तो अब हम कल मिले, कल नहीं, अब डायरेक्ट सोमवार है तो संडे को एक लेक्चर ले लूंगा. ठीक है. हाँ सैटरडे संडे एक एक ले लेंगे सर हम. ठीक है. तो यहाँ पे हम हाँ. स्टॉप करते हैं. हैव अ गुड डे. बाय.